Good morning, students. And in last lecture, we discussed about file handling. And we know that in file handling, we can write the data in external files. And in future, we can use these files for retrieving the data. Uh, in the case of data files, first, there are two types of files. One is called text file. Another is called binary file, and last one, there is another type that is called comma separated value file. So in a file handling, we will discuss three types of file. Now, in the case of text file, whatever you type in the file will be properly readable. But when we save the file in hard disk, the format will be different. It means when we open the file, format is different. When file is saved in the hard disk, format is different. So there is a conversion from one format to another format. So it is a time consuming. But in the case of binary format, we will see the file contents exactly same as it is saved in the hard disk. So in a text file, we will do two things. One is writing the data. Another is reading the data. So writing the data, I have already discussed. There are two functions, write and write lines. तो अगर आपने list write करवानी है, तो you will use write lines, and if you want to write a string, you will use write function. In the case of reading, there are three types of reading: character wise, word wise, and line wise. And in the case of character wise reading, one character at a time we can read from the file. Okay, and in word wise, full word at a time. In line wise, a complete line at a time. So any doubt in this? Avi, any doubt in this? No, sir. Okay, beta. Now, first of all, I will write the data in the file, and then I will do reading work. So look at here. For writing the data in text file, first of all, you will have to open the file, and we will have to declare a file pointer. यहाँ पे f क्या है? File pointer, just like a variable. We will use open function, then name of the file. Suppose it is data.txt, and we will have to give here mode. Here I am using W mode for writing the data. So later on I will discuss the different modes in the case of text file. Then I take one variable n and integer input number of lines you want to write in the file. Now I will use for loop here, for I in range n. Now first of all, I will give the input of the line. For this, I will use here one, I take one variable L, input, enter the line. So user will give the input, and after that, we will use F. F is a file pointer dot write. It means we are going to write the data in file pointer F, और file pointer F किसको recognize कर रहा है? data.txt फाइल को. तो क्या राइट हमने करना है? L को,
And if you want to change the line, you will have to use here f dot write in double quotes /n. /n is for change the line. So by using this, we can write number of files, number of lines, and later on we will have to close the file. So close will the discontinue the connection. So with the help of open function, we establish the connection, and with the help of close function, we are going to stop the connection. I'm going to save this file, saving in the desktop. File name is new. I'm using here text file 1. I save this file in desktop. Remember one thing, in W mode, if file is not in the computer, the file will automatically generated, automatically created. So I am running the program. So number of lines you want to write here, I type here 3, and first line is my subject is computer. I am using desktop. My programming language is Python. So here 3 lines are saved in the file. So I'm closing this, minimize this, and look at here. One file, that is text file 1. That is a your Python file. Another file is data, automatically created in the file. I open this file in Notepad, and you will see 3 lines are there. Aditya, is it clear? Yes, quickly Yes, unmute. sir. Okay, beta. Sushant, is it clear, beta? Yes, sir. Okay, beta. Now we can use here 2 functions. One is write and write lines. अगर आपके पास एक लिस्ट है तो आप write lines लगाओगे, ठीक है? तो I will send you these very very small programs. तो मैं आपको send कर दूंगा. Now I am going to read the file. ठीक है, मैं फाइल को अब रीड करने जा रहा हूं. I am going to save as the file. Here is a text file 2. So now I am going to read the file, and remember one thing, for reading the file must be saved in your computer system. It will not automatically generated. The file must be there in the computer system. So here, first of all, for reading, there are one function that is called read. Okay, so I'm using here, function name is here I take variable r is equal to f dot read. Students, if I print r, it will show the complete data from top to bottom. It will read the file, and here r will be a string. So look at here, I'm saving this and running the program. So look at here, complete data. तो इसका मतलब ये हुआ R में आपके पास पूरी की स्ट्रिंग है, और लाइन क्यों चेंज हो रही है? रीजन इज क्योंकि हमने स्लैश एन लगाया हुआ है, तो स्लैश एन इज ए पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, गिव योर रिस्पॉन्स. ईशप्रीत? हाँ जी सर. ओके बेटा. नाउ
अगर मैं आपको एक पाइथन में एक इसमें अब हमारे पास है कि अगर हम यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर आई इन आर, तो अगर हम रेंज नहीं लगाते तो आई में फर्स्ट कैरेक्टर आता है, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, लाइक दिस. तो इफ आई प्रिंट दैट आई, so you will find that every character in separate line. Look at here, I am running this program. So look at here. So here I can use different logic. For example, if I'm using if I dot is upper, it means I want to display the data in case the data is in uppercase. So I am running this program. So look at here, M, I, M means three characters are capital. Meaning अगर अपनी check करो, one is M, then I, then M. The first letter of every line is capital. Rest of letters are small. So if you want to count them, I take here one variable, count is equal to 0 because initially there is no any capital letter. In case there is a capital letter, I will make one increment in the variable, and after the loop, I will print number of characters. So look at here, I will display here count. I am running this program. Look at here, number of characters are three capital letters. So here I am inserting one comment here. So if I am using in place of is upper, is lower, so it will not display the data, but it will count number of lower case. I run the program. So 60 characters are in small case. So if you have any doubt, please discuss with me. Kshitij. No doubt, sir. Okay, beta. So if the program is of vowels, if you want to count the number of vowels in the file, so I will take the program maybe like if I double equal to small a, there is a one very good method. I declare one list here. Square bracket, I take small a, capital A, small e, capital E, small I, capital I, small u, capital U. So if I'm using if I in L, तो बेटा अगर वो कैरेक्टर L में है, L means list. In that case, I will one increment in the variable. So number of otherwise मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ना था if I double equal to small a or I double equal to capital A or I double equal to small e. So in place of writing it too big statement, I am using if I in L. I am running this program. So look at here, 17. So Bhumika, is it clear? Malvia? Yes. Malvia, any doubt in this? No, sir. Okay, bache. No, sir. Okay, beta. So there are number of programs that are linked with the
character wise reading. Now, in the case of your word wise reading, so look at here, I'm saving this program again. It is text file 3. Now what I am doing here, I am reading the file and I will focus on word. Okay, students, remember one thing. I will read the file. So R is a string. I'm going to discuss one function here. Suppose I have a string S. In this, I have good morning, India. And if I'm using here S dot split. So look at here, there will be a list in which the words will be, different words will be the element of the list. So look at here. So we will use split function there. Reading will be exactly same as it is in the character wise. I take here one variable W and here I will use R dot split. Now Kshitij, unmute yourself. Kshitij, unmute yourself. Ishmaneet. हाँ जी सर. तो यहाँ पे इश्मनीत, इसमें W क्या है बेटा? W इज ए स्ट्रिंग और लिस्ट यस सर. और टप्पल क्या है ये बेटा? सर ये लिस्ट बन जाएगी सर, वो मतलब कि वर्ड्स की लिस्ट बन जाएगी. हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. तो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन लगाई? इफ द वर्ड, इफ I in W, तो W में क्या आएगा? I में क्या होगा? फर्स्ट वर्ड, देन सेकंड वर्ड, देन थर्ड वर्ड. हमने चेक किया कि अगर वो वर्ड, क्योंकि वर्ड इज ए स्ट्रिंग नाउ, उसका फर्स्ट कैरेक्टर बेटा, क्योंकि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में फर्स्ट कैरेक्टर इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3. अगर वो स्मॉल ए है, कैपिटल है और इसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल ए है, in that case we display the complete word. Okay, look at here. I run the module. So first I check what is in the file. I'm going to check that. In the file, data is here. Small a is here. I'm checking the coding. सर आपने दोनों में बड़ा ये लिखा हुआ है. Okay, दोनों में बड़ा है. Oh yes. So I am running the program again. So look at here, word is M. Okay, look at here. Yes, this is a one word, complete word. So Avi, is it clear? हाँ जी सर. Okay, बच्चे. Yes, this is called word-wise reading. Okay, now if you have any doubt, then I will revise this. Let us make some more program of word-wise. Let us in a sample paper, CBSE sample paper, I am going to discuss these type of questions first.
Okay, students, look at here. Write a function in Python. So they are saying make a function. तो फंक्शन बनाने के लिए कह रहे थे. तो पहले क्या करते हैं हम, जो अभी हमने कोडिंग की है उसको फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा. तो आई डिक्लेयर वन फंक्शन def. So function is display या display. अब आपने क्या करना है, सारी की सारी लाइंस उसके अंदर लेके आनी है अपने इंडेंटेशन के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको everything inside the function. Okay, and after that the function will not give us a result if I am not calling it, if it will not display the data. So I will call it. For theory purpose, don't use the function calling. So for practical purpose, you will have to use this. I am running the module. There is one error because there is an indentation problem. So I am running the program again. So look at here. Answer is there. ठीक है, तो I think इसमें कोई भी आपके पास डाउट नहीं होगा. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि पेपर में क्वेश्चन है कि हमने काउंट करने हैं नंबर ऑफ मी और माई. तो दो वर्ड्स उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है. तो एग्जांपल में उन्होंने बताया हुआ कि इसमें 4 टाइम मी और माई वर्ड आया है. तो हमने सिर्फ यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम नहीं बनाना. तो you will have to make only the function. So I am opening the notepad. So look at here. I will use def. Name of the function is, look at here. Function name is not given here. So I'm going to use it here. Function calculate. If function name is given there, then we will have to use that. First, we will open the file. Name of the file is story.txt. I will open this file in reading mode. After that, I will read the file by using read function. Now, Dhruv, unmute yourself. Yes, sir. बेटा ये वर्ड वाइज वर्ड वाला क्वेश्चन है, कैरेक्टर वाला है या लाइन का क्वेश्चन, लाइन वाइज का? सर वर्ड का है. यस, वर्ड वाइज. तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्प्लिट लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो हियर आई टेक हियर, यहाँ पे मैं एस ले रहा हूँ. ठीक है, स्ट्रिंग, और यहाँ पे ले रहा हूँ w इज इक्वल टू s डॉट स्प्लिट. तो एक लिस्ट बन जाएगी. w इज अ लिस्ट. नाउ फॉर I in w, तो it will read first word, then second word, then third word, like this. And if I double equal to me or I double equal to my, पेपर में भी यही क्वेश्चन है आपके पास, me and my. okay, in that case I'm going to declare one variable here, count equal to 0, and if the searching is successful, in that case I will make one increment in count, and after the loop I will print. तो उनका मैसेज कैसे आ रहा था बेटा, देखो, look at here. उनका मैसेज था count of me in 5. So I will
display message count of me slash my. Here I will display count variable, and after that I will close the file. No need to call it because it is a theory question. तो आपने function बनाने के लिए कहा है, complete program बनाने के लिए कहा. In case it is a practically you want to implement this, then calculate. So I am copying this coding, and in Python I am going to run this. तो यहाँ पे क्योंकि मैंने फाइल बनाई हुई है नॉट अ स्टोरी डॉट txt, तो मैंने फाइल बनाई थी यहाँ पे data.txt. तो आई एम टेकिंग हियर data.txt. So I am going to implement this. सर स्प्लिट की स्पेलिंग रॉन्ग है. Oh, SPLIC. yes. Okay, look at here. Text file 4. So look at here. 2 time me और my 2 time है यहाँ पे word आएगा. हम चेक करते हैं. In data, I open the file in Notepad. Okay, my 2 time my word is there. So that's why answer is 2. So if you have any doubt, raise your hands. Otherwise, note down the coding. Note down the coding. Excuse me, sir. Yes, बच्चे. सर एक बार एक्सप्लेन कर दो इसको फिर से. Okay, Pawan, look at here. We declare a function. ठीक है? Yes, sir. Okay, उसके बाद हमने क्या किया? File. We open the file. F is a file pointer. जो उसको फाइल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइल कौन सी है? data.txt. और उसका मोड कौन सा है? R. R mode means reading mode. पवन यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. फिर हमने एक वेरिएबल लिया count is equal to 0 because we are calculating, so that's why we declare one variable. Now we read the complete file. F dot read. तो F किसको रीड करेगा? F means data.txt को रीड करेगा और S में सेव कर देगा. S is a string. उसमें सारा का सारा डाटा आ जाएगा from top to bottom. पवन क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. बाद हमने क्या किया? W लिस्ट बनाई. W is a list. उसमें क्या कर दिया हमने? जितने वर्ड्स थे उसको एज एन एलिमेंट बना दिया. अभी मैंने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाया था ना. यहाँ पे ये देखो इधर हमने क्या Yes, किया था कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले ली थी गुड मॉर्निंग इंडिया, और जब मैंने किया था एस डॉट स्प्लिट तो एक लिस्ट बन गई थी. तो यहाँ पे W क्या है? लिस्ट. अब मैंने जब फॉर लूप लगाया फॉर आई इन W, तो W आई में फर्स्ट वर्ड आया, देन सेकंड, देन थर्ड. ये आइटरेशंस में आता रहेगा, साइकिल में आते रहेंगे. तो फर्स्ट वर्ड आया, हमने उसको मैच किया मी के साथ और माई के साथ. अगर कैरेक्टर मैच हो गया, वर्ड पूरा मैच हो गया, पूरा का पूरा वर्ड, हमने काउंट में इंक्रीमेंट लगा दिया. और अगर नहीं होगा, देयर विल बी नो एनी टाइप ऑफ इंप्लीमेंटेशन. और लूप के बाहर हमने काउंट को डिस्प्ले करा दिया. काउंट में कब इंक्रीमेंट लगा था? इन केस वर्ड्स एग्जैक्टली सेम. पवन, इट इज क्लियर? Okay, sir. इसमें कोई डाउट है तो Yes, डिस्कस sir. भी बेटा. Thank you. एनी टाइप ऑफ डाउट हियर? सुशांत? एक्सक्यूज मी सर. यस बच्चे. सर एक बारी वो दिखा दो आउटपुट. ओके बेटा. Look at here, count of me slash my in file 2.
सुशांत क्लियर है? Yes, sir. So this is the word wise reading, and next lecture I will discuss line wise reading. ठीक है, तो line wise reading में मैं थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे रहा हूं what we will use here. हमने यहाँ पे क्या करना है, रीड की जगह लगाना है रीड लाइंस. इससे पता क्या होगा, हमारे पास जो एस बनेगी वो हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी. लिस्ट में अलग अलग स्ट्रिंग, अलग अलग लाइंस क्या बन जाएंगी, उसका एलिमेंट. तो जब हम यूज करेंगे यहाँ पे इफ आई इन एस, तो इसमें आई में फर्स्ट लाइन आएगी, देन सेकंड लाइन, देन थर्ड लाइन. तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन काउंट करना चाहते हैं तो वी विल मेक वन इंक्रीमेंटेड काउंट. ठीक है, तो और यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस. ठीक है, आई एम इम्प्लीमेंटिंग दिस, बट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट जो आपका पीरियड होगा, आई विल डिस्कस दैट. आई एम जस्ट शोइंग. So it display number of lines 3. So look at here in text file, हमारे पास 3 lines है, that's why it returned 3. So time is over now. In next period, in next week, we will discuss line wise. Okay. So I am closing the meeting. Take care. Bye, better.